Okay, hello everyone, good morning. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let us start with stack. As we have discussed in the last class, like stack is a linear data structure, of course, because this is a sequence. Because you cannot jump to any other element until unless you pass through some of the intermediate elements. So that's why it is linear data structure. But thing here is that it is a more restricted linear data structure in comparison to the list data structure. Why? Because the entry and exit in that stack is always very restricted. It's always from the last in first out arrangement. Okay, whosoever is entering last, so you're going to be come out first. Okay, so these things are already known to you. So where is my these things? So you see here that one is entering first, and one is and three is entering last. So if you have to delete, you have to delete the three only. It is somewhat like our book stack. Okay, book stack. If you are storing book one on top of the other, you cannot take out anything in between because it will fall down everything. So always you have to remove the top one first, then the next one, then next one. So this is the way how we basically arrange stack of any items. Okay, stack of any items that we are doing using in this fashion. Now, how we're going to do it in computer so that my arrangement should be something like that. That is last in first out kind of arrangement. So I can show you there are, as I've mentioned, that there are two different operations. One is called push operation, another is pop operations. So push is always one top of the other. Okay, one top of the other. You have to go on like that. Okay, as many push you'll do that, you have to do it. And pop also, you'll have to delete it from the top element. Okay, you have to delete it from the top element. So there are two ways, like the list, we can implement stack data structure or stack ADT, array implementation, and linked list implementation. So stack implementation you are familiar with. Okay, but the thing here is that it should be better that you should have a kind of a ADT structure. That means as a single bundle, we should able to represent a whole stack data structure, because whenever you are storing some data in the stack, okay, naturally you need an array because it's a collection of elements, similar elements. So, but the only thing difference here is that here you have to keep track of like where is the top, okay, top positions. That means you are always trying to mark where my entry or exit will going to happen, from which location of that array. Okay, which location of that array. So that is the thing that we have to do it. Okay, so in push operation, you see here already one you have entered, then you are pushing the what is called the element 2. So element 2 is going to be on the top. That means after entering 1, my next position somewhere should be here. Okay, my next position somewhere should be here. Okay, so that I can able to enter the 2. So now if you would like to delete immediately, if you apply pop operations, the pop also is going to happen from the top position. Okay, so from the top position. So that way you have to go on doing these things. Okay, so there are two operations: push operation and pop operation. Sometimes in some book they mention about what is called peep operation. Okay, so peep operation basically just to see what are the elements which are there in the stack. So it's like a normal what is called display of the array elements. Okay, but it should be in the order that top element should be at the beginning, and then second, next, like that. You have to display that. So, but it is actually meaningless because we normally don't do in real life. It doesn't require any kind of peep operation.
or display operations. Only thing is that like I'm sending it, I'm putting a data in the order, and I'm going to taking out the last one entered should be come out at the beginning. Okay. Now how to implement in C? So you need an array, and then also you need another variable that is called top. Let us assume it can be any name. I'm not talking about it's a fixed. So you need a variable called array, array of integers, array of characters, array of float, array of anything. It doesn't matter. It may be even structure also, no problem. Array means anything, any array of any element, array of any type of element. Okay, and then tops always should be integer. Okay, because it's basically keep track of the index of that array. Okay, so index of that array where you are going to enter the value. So we normally initialize top with -1. Okay, usually, but you can change it. There is no harm on that. But normally standard way to do that thing, that top should be -1. So if at the very beginning my top, if it is -1, then we'll say that my stack is empty. Okay, just looking into the value of top, we can say my stack is empty. Okay, so there are two operations. There are two basic conditions that may come out. One is called underflow and overflow. They are the two terms that we normally use it. So underflow means empty, and overflow means full. Okay, so these are the two things that actually happens. But let me tell you, in array-based implementation, full condition is very much possible because you have to declare an array of particular size. But if you implement linked list virtually, there is no full condition virtually. But definitely, if you go on adding many one time, your memory will going to be saturated, and it will going to give you the full. But there is no short limit you can go on. But in array, very frequently you're going to get that full conditions, because you have to declare an array at the beginning, or depends on some value only. You have to beforehand you have to create that array. So now since you need a bundle like this, that which contain two things, which contains basically two things. One is your array, and another is your what is called your top. So now we're going to make as a structure. Okay, so we're going to create a structure called stack, and then we're going to perform the operations from there. But there are two operations that I have told you. So I don't know where the figures are. So for the push operations, what it will happen? We'll check the conditions, like if my top is less than max, that means it's not. I mean, if my top, let us assume my array size is this. Okay, my array size is this much. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so I mean you can go up to 6 elements. Okay, so if your top reaches 6, that means index 6, that means you cannot enter any more values into that stack. So in that case, it will going to be false, and then it will come to else part, that is stack full. So stack full, or very so if the top value is less than max, fine, no problem. You have a space to enter new elements. Okay, so you go on doing these things. Okay. Less than that, then what we'll do, we'll first increment the top. Okay, we'll first increment the top, and then we're going to add that value, because you see top we are starting with -1. So what we'll do, first element, what it will do first top plus top, means plus top become now 0, and then we'll assign to array top. Okay, array 0. We're going to add the value in array 0. Okay, array 0. So in this way, you can go on adding the element, and at the same time you can delete also. Now,
during deletions, as I've said, if my stack top is -1, it means there is no element is over there. So if you cannot delete anything. Okay, once there is no element in that stack, how can you delete? So in that case, we will say that stack is empty or stack underflow. Okay, stack underflow, so you cannot delete. Otherwise you can delete. Okay, I'll delete. Normally there is no physical deletions happens over there. I'm just changing my top, and then what you can do maximum you can return it, and then that the top value you have to return. Okay, top value you will have to return, and you can print it or whatever you want to do. You can do these things. Okay, you can do these things. Now, how are we going to do that? Let us assume you have already entered one value 5. Now you would like to do a pop operation. So what will happen? Simply you will print array top. Array top is how much? Array top is basically 0. So you will basically print 0 5, and then what it will happen? Top minus minus. So top again going to be here. That is -1. Okay. So this way you can go on doing these things. Okay. So if I go back to this example, you see here. Okay, you see here. What is the value of top? Okay, here the value of top is how much? How much is the value of top? In this figure, what is the value of top? This is 1. Okay, and yeah, and here what is the value of top? 2, sir. Here, देख के बोलो. 4, sir. 4. Yes. What is the value of top here? 2, sir. 2. 2. So 3. 3. So 1. 1. Okay. Yeah, the value is 1. What is the value here? -1. -1. Is it clear to you? Is it clear to you? Yes, sir. So can you able to implement, or I have to discuss? Can I able to implement, or I have to discuss? सर थोड़ा बता दीजिए. So first of all, what we have to do? We have to create a structure. We always do it like that. We need it. Let us assume I'm creating a stack of these things. How you do it? This signature in the front.
I'm writing in a particular style. If possible, you just try to follow these things so that you can have a better organized program.
So up to this, I have written. Can you write these things? Can you write the what is called push pop operation? Okay, let me write that push pop operation for you. This for this time. Okay, it's simple. Here only. One important thing is, you have to pass this one also. I don't like to make it more complex at the very beginning, but to write a better program, it should be a better one.
In fact, here its pointer is not prepared. Anyway, anything I am missing? Some bit of easier. हो जाएगा ना? Declared here. क्या हो रहा है? ये क्या चीज है? Declaration note declared here. Return with no hello. अच्छा. आ ही नहीं रहा है. हाँ? नहीं आ रहा है. वो अभी होगा. ये नहीं आ रहा. देखा है? अच्छा मतलब नहीं आ रहा है.
push A, push B, let's see, push D, pop D, पॉप क्यों नहीं हुआ? मिसिंग हो गया क्यों? पहला वाला ले रहा था डी, मिसिंग हो रहा है क्यों? सी आ रहा है, प्रॉब्लम हुआ था, मिसिंग हो रहा है, कुछ एक प्रॉब्लम हुआ है, करना पड़ेगा। ये शायद वैल्यू में प्रॉब्लम होगा, एक वैल्यू क्या था, यहाँ तक तो ठीक है, ये जगह में कुछ एक प्रॉब्लम होगा। अच्छा ठीक है, वो इतना बड़ा बात नहीं है। अच्छा, नाउ टेल मी अदर्स एवरीवन, व्हाई शुड आई एक्सप्लेन? कहाँ मैं एक्सप्लेन करूँ? कहाँ मैं एक्सप्लेन करूँ? बोलो। Whether do you understand these things, the code? सर पुश फंक्शन एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कौन सा वाला? सर फंक्शन पुश फंक्शन। पुश फंक्शन, बाकी ये सब क्लियर है मेन के अंदर का? यस सर। बाकी लोग? push function case 2. इस फंक्शन केस 2, अच्छा this function and case 2. So you see here what I'm doing. I have created one structure as I mentioned, okay, with two element character array and in top, okay, and then I'm declaring two functions push and pop. I'll come into that. Before, let us assume there are two functions push and pop. Okay, there are two functions push and pop. I'll explain it later on. Now, first I'm declaring a variable stk of type stack, and then I am initializing the value of what is called top with -1, and then I'm taking few variables just to run the program, choice and everything. Now while one, as you know, it's a continuous loop. It's a continuous loop. So I have used three options: push, pop, and quit from the program. So I'm taking these things in the variable called choice. Okay, 1, 2, or 3, anything user will press it. So switch. Okay, switch case. What it is happening? 1. So 1 means push. So what you'll do, you're going to take a character, because you can do it for the integer also, no problem. I'm just showing it is in character. So enter a character to push. Okay, so you will scan that value. Okay, you will scan that value. And then I'm going to read it in another character variable that is called ch, and then I'm going to push, call the push function by sending that whole structure. Okay, by sending the whole structure and the variable. Okay, and then break. Okay, and the variable and break. Fine. And then case 2 is a pop operation. So what I'll do, I'll call the function called pop by sending the structure. Okay. Here actually, since here you are actually trying to access that stack inside members of the stack, that's why you have to do, since you are changing the stack variable itself, so that's why you have to send the address of that stack. But since here pop, you are not actually doing any changes, but just, you are changing, you required it, because top actually you are changing, so definitely you required it. Anyway, forget about it. So you have to send the address of the stack. Okay, so that you can do the changes in the stack data structure, and then it will going to return, my pop operation actually return the top element. Okay, it will return the top element. So C not equal to, so if
So if the stack is empty, then it will return null. Okay, it will return null, or otherwise it will return the value. So what I have done, I have just put a check if it is equals to null. So if it is equals to null, that means it's not empty. So what it will happen, it will come back and then it will going to print the popped element. Okay, it will print the popped element. It will come out and quitting and all, everything is fine. Now let us see the push operation. Push operations, since you are sending an address of the structure, you need a pointer to that structure. So you have used a pointer to the structure, and then the element that you'd like to enter over here. Okay, so ch. Now you are checking that whether the top of that stack, okay, the top of the stack, whether it is less than 50 or not. Okay, whether it's less than 50 or not. So if it is less than 50, that means it is not full. So then what it will happen, you will going to do, you have to enter the element into the top position of the stack. Now, since you are using a pointer, how to get that variables, how to get the members of the particular structure. So so there are two members, as if you can remember. One is array, and another is top. Okay. Now to get access of those members for that stack for which you have sent the address. Okay. So you have to declare like a linked list. You have to declare st is the pointer. So to access the member of a structure by using a pointer, you can use what is called your arrow operator. So st is basically holding the address of the structure. So that arrow array means the array of that particular variable structure you are actually referring, and then st arrow top means what is called structure of that pointer where it is pointing at the top. So the top variable of that, and then you are doing the plus, and then you are adding over there. Okay. So if it is not less than, if it is equals to 50, then you will say the stack is overflow. Okay. So similarly for the pop operations, so you will send the address of that stack, and then if the stop is equals to -1, you will say underflow, and you will return null. Okay, null character. Otherwise, what it will do, you will just return the value stk from array, the top element, and then it will do the minus of the top. So that is, first it will return the value, and then it will going to do the top minus, and then that value will going to print it over there. Is it clear, or shall I explain it with a figure? Do you find it difficult to understand, or shall I use some figure for that? Hello? Is it okay, or shall I explain it in other way? Sir, explain. सर एक बार फिर से बता दीजिए. So what I have done, I have created a structure stk. I have created a variable called stk. Created a variable stk. इसमें क्या है? Array है size 50, और एक variable है top. Okay, so the stk is a variable in the stack. Now what will happen? This one going to have an address 19756. Let us see. Now what I'll do, I'll going to send this address over here. So इसमें क्या होगा? Stack. We are initializing top as -1. So इसमें क्या होगा? This is what? This is basically array. This is array. Okay, and this is top.
So initially this is -1. So I am sending the whole structure. So if I'm sending it the whole structure, it will going to be 19756 is the address, and then you would like to send a value the character that is A. Okay, इसमें क्या होगा? What it is there? if that means the first thing that I have to do is to check whether my stack is, while pushing you have to check whether it is full or not, while popping you have to check it whether it's underflow or not. So pushing means checking means that whether my top reaches the maximum limit or not. Okay, so that is maximum limit is 50. If it is not 50, then you can push it. If it is not, if it is equal to 50, the maximum, if it is maximum limit, then you cannot push further. Okay, now how to do that thing? What I have written here, I have used a pointer. Okay, now pointer is basically your ST. I have given a name ST. You can see the program. It's a pointer. What it will do is basically holding the address I am sending 15796. So it's basically pointing to that. Now to get access of STK's array and STK's top by using ST, then what you will have to write? ST arrow array. It means ST arrow array. You are accessing this. Now you have to get the top. अच्छा टॉप से हो जाएगा, ठीक है. एक बार दिखा लेता हूँ, बाद में इसको ये करूँगा, ये सही नहीं है. And ST arrow top. ST arrow top means ST arrow top. This top element. That means actually you are accessing the STK's top. By using the pointer ST, you are accessing the top and array. अच्छा इसमें हम लोग ये सब चेक नहीं होगा. इसमें हम लोग को बेसिकली क्या चेक करना पड़ेगा? The top, whether the top is ST arrow top. If it is less than 50, then we can go for the pushing that element. Where we'll push? We'll push in the top position. Okay, so for that, what you have to do? ST arrow array ST arrow. अच्छा इसमें भी तो थोड़ा प्रॉब्लम है, इसमें लिखना पड़ेगा और चीज First, I am going to access the top of STK. STK's top को access करना है by using ST. Okay, so ST arrow top. हम लोग क्या करते हैं normally इसको plus करते हैं पहले. Okay, is equal to that is value A. Okay. I'm pushing the value A into the expression. Else overflow. यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? It means if my let us assume at the very beginning the first element that I am entering, what I'll do? ये किसका array है? ये ST का array है. STK का array है. Okay, I am trying to access this by using ST. Okay, ये इसका बड़ा पिक्चर, ये जो पिक्चर आप लोग मैंने दिया, इसका ही पिक्चर अंदर में दिखा रहा हूँ. So first what I'll do, STK minus top. What is the value of STK arrow top? What is the value of STK arrow top? Sorry, ST arrow top. What is the value of that? बाकी को बोलने दो. What is ST arrow top? Hello? -1. -1. Yeah. Why -1? Because ST arrow top. So this is -1. So it is less than 50. So we'll go here. ST arrow array. ST arrow array means these array. Okay. And then first ST arrow top.
ST arrow top is how much? -1. So what it will do? First it will do plus plus top. So top become 0. Okay, top becomes 0 and then array 0. Array 0 we are adding value A. Okay, array value A. Okay, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7. Okay, ये 8 से ये वैल्यू ना इसको 8 दिखा देता हूँ. हाँ, ये छोड़ दो, ये 0 नीचे. इसको बराबर यूज करें. So now again you are calling push, and then this time you are sending B. Okay, sending B. So what will happen? ST arrow top. How much ST arrow top? 0, sir. Yeah, 0. So is it less than 8? Yes, it is less than 8. Then ST arrow array plus ST arrow top. That means how much the top will be? 1, sir. 1. So yeah, so you are going to add B here. Okay, is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. So now, well, let us do C, D, E, F, G, H. Okay, up to this you have filled it up. Now, what will be the value of top? Tell me. 8. 7, sir. Huh? Tell me. कितना होगा? Hello, बोलो. 7 or 8? 7, sir. 7? 7. 7? Okay. अगर 7 है तो इसमें प्रॉब्लम होगा. So it should be so 7. Now once you are entering, so the top will remain over there. Am I right? So क्या mistake होगा ये प्रोग्राम में? क्या mistake होगा? Mistake क्या होगा बोलो? क्या changes करना है मुझे प्रोग्राम में? सोचो तो. Is there any error? Is there any error? So 7 is less than 8. So वो condition. क्या होगा? क्या changes करना है? क्या So लिखूं? top should be less than 8 minus 1. क्या लिखूं क्या? Where I have to do the changes? So push के function में हम लोग change करेंगे. If st arrow top then ST arrow top less than 8 minus 1. 8 minus 1 क्यों लिखना है? 7 लिखो. Okay. Now once it reaches maximum limit, so we'll say this is overflow. Okay, it's an overflow. Okay, otherwise it will go on doing this. समझ में आया? समझ में आया? Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. So now push pop also. Pop हम लोग pop में क्या कर रहे हैं? Pop में क्या कर रहे हैं? Pop
then st हम लोग ले लेते हैं pointer. So what you'll do? इसमें during pop we'll check whether the list is empty or not or the stack is empty or not. How to check? बता तो क्या line है? st If arrow st of top is equal to minus. st arrow top equals to -1. equals to -1. तो क्या होगा? This is underflow. Am I right? This is underflow. मतलब कोई pop होगा नहीं. Otherwise, how will pop? बोलो. st of array st of top minus minus. st array top Minus minus. Okay, so that will go to return. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. बाकी लोग? Yes, sir. तुम लोग को वॉइस थोड़ा लो ही रहता है हमेशा. प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे क्या होगा? अच्छा, what I'll do while I am sharing this code, okay? Share कहाँ है? कोड को तुम लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ. कहाँ है? ये मैं शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, ये प्रोग्राम को खोलो. खोल के एक जो ग्रुप थोड़ा वीक फील कर रहा है उन लोग दे विल जस्ट कन्वर्ट दिस होल प्रोग्राम टू कंसीडर द इंटीजर स्टैक. ठीक है, इंटीजर स्टैक का बनाना है. ओके, सेम प्रोग्राम को चेंजेस करना है. और जो लोग फील करते हैं कि इंटीजर ये बहुत सिंपल सा वर्क है फॉर मी, फॉर देम आई एम गोइंग टू आस्क यू टू मेक मोर डायनामिक. इसमें देखो हम लोग क्या कर रहे हैं. जो एरे है, ये एरे बेसिकली ये है, क्या नाम है, फिक्स्ड है. यहाँ पे तुम लोग को डायनामिक करना है. यू हैव टू यूज मैलोक, नंबर 1. नंबर 2, वो स्टैक के अंदर ही एक और मेंबर डालना है जो उसका लिमिट बताएगा कितना एलिमेंट, उसका साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे जो यूजर देगा, क्योंकि डायनामिक होगा तो यूजर देगा. सो दैट आल्सो यू हैव टू स्टोर इट इनसाइड दैट स्टैक इटसेल्फ. ठीक है, ये करके चेंजेस करके मुझे दिखाओ. समझ में आया कि नहीं आया? पूरा डायनामिक करना है तुम लोगों को. एक ग्रुप को पूरा डायनामिक करना है. एक ग्रुप को पूरा ये चीज को डायनामिक करना है. और दूसरा ग्रुप को इसको इंटीजर, सेम प्रोग्राम को इंटीजर में कन्वर्ट करना है कि इंटीजर वेरिएबल कैसे ले सकते हैं. जो माइनर चेंजेस है वो करना है. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? समझ में आया? बाकी सब लोग को समझ में आया? Yes, sir. So हाँ. Yes, तो sir. इसको जल्दी करो और मुझे दिखाओ. तुम लोग को कॉन्फिडेंस बिल्डअप ही नहीं हो रहा है. एटलीस्ट टैग तो करके दिखाओ. इसमें तो कैसे क्या करोगे? इसको दिखाओ जल्दी. ठीक है.
जो दिखाएगा हाथ उठाना, जो इंटीजर दिखाएगा उसको हाथ उठाना, जो डायनामिक दिखाएगा वो हाथ उठाना। हाँ, मदन का कौन सा इंटीजर? मदन का कौन सा इंटीजर? अनिता कौन सा? सुभाष? इंटीजर। अनिता का कौन सा है? इंटीजर। इंटीजर। सुभाष? सर इंटीजर। सब सिंपल वाला ले रहा है काम। हाँ, और बाकी? राम तो दिखा रहा है डायनामिक, डायनामिक दिखा रहे हो राम? राम डायनामिक? और कोई डायनामिक का? और कोई डायनामिक दिखा रहा है? हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, इस प्रोग्राम में ऐसे ही बनता है थोड़ा ही। मजाक तो नहीं है, आसमान से तो कोई गिरता नहीं है, धीरे 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 ग्रो होता है। तुम लोग को मतलब वो एक ये बन चुका है कि जल्दी जल्दी इंटीजर ही कर लेते हैं। थोड़ा चैलेंज लेने के लिए ट्राई करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। नहीं तो पहले मदन शेयर करो। और कौन है, और कौन है? मैं बाकी हाथ नहीं दिख रहा हूँ। प्रवेश, प्रवेश सर इंटीजर सर। इंटीजर। शिवम इंटीजर है सर। इंटीजर तुम्हारा भी। राम? शिवम? नहीं नहीं, ये का शिवम का। शिवम? इंटीजर है सर। हाँ, नहीं रन हो रहा है प्रोग्राम इंटीजर का? यस सर। ले रहा है, इंटीजर वैल्यू ले रहा है? यस सर। अच्छा, तो दिखाओ एक बार, शेयर करो। मैंने भेजा है हाँ। सर आपको लिंक। है? लिंक दिया हूँ सर। लिंक में मत दिखाओ, शेयर करो। मतलब शेयर मतलब तुम्हारा स्क्रीन शेयर करो और उसको खोलो। शेयर कर पाओगे कि नहीं? शिवम? सर मेरा हो गया सर। हाँ, तो सुभाष दिखाओ। अच्छा, शिवम दिखा रहा है, ठीक है, शिवम दिखा रहा है। हाँ, शिवम दिखाओ, जाओ क्या क्या चेंजेस किया देखो, क्या क्या चेंजेस किया दिखाओ। जाओ ऊपर में जाओ, ऊपर में जाओ, ऊपर में जाओ। ऊपर में वो सब क्या लिख के रखे, उसको कमेंट्स लाइन करो। कैसे प्रोग्राम रन हो रहा है वो? ऊपर में जाओ, ऊपर में जाओ, ऊपर में जाओ। हाँ, उसमें शिवम कुमार और इसको कमेंट लाइन करो। हम्म, नीचे जाओ, थोड़ा नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे नीचे नीचे, थोड़ा नीचे जाओ। रन नहीं करना है, हाँ नीचे जाओ। हाँ, हाँ नीचे जाओ, नीचे जाओ, एक मिनट। हाँ हाँ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ थोड़ा, एक मिनट रुको। ये कैसे, कहाँ से आ रहा है ये? इसको यहाँ पे भी कैरेक्टर रिटर्न कर रहे हो तुम? सीखो। अच्छा ठीक है, क्लोज करो, तुम नहीं चाहिए, ठीक है। अभी पहले इसको देखता हूँ, अनीता को देखता हूँ। अनीता दिखाओ, शेयर करो स्क्रीन। अनीता?
Rijwana, are you there? Rijwana, Yes, sir. are you there? Are you doing these things or not? So yes. दिखाओ, स्क्रीन दिखाओ. रिजवाना, पहले मैं अनीता का देख लेता हूँ, बाद में तुम्हारा रेडी करके रख. वो सब एक नाल ही रिटर्न कर रहे हो. रिटर्न तुम लोग -2 नहीं कर पा रहे हो, -1 नहीं कर पा रहे हो. जाओ नीचे, जाओ नीचे, जाओ नीचे, जाओ झट 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 झट. सबका एक ही हालत है, एक ही लगता है प्रोग्राम. हाँ ठीक है, क्लोज करो. रिजवाना खोलो, रिजवाना शेयर करो. सर मेरा लैपटॉप में चार्ज नहीं है तो यहाँ पे करंट नहीं था. देयर इज सम एक्सक्यूज है, नहीं सीखना चाहते तो व्हाट टू डू. सुभाष, सुभाष जल्दी शेयर करो. सुभाष, तो वही प्रोग्राम ही रह गया. मैंने क्या चेंजेस किया सुभाष? सुभाष चेंजेस कहाँ किया? कहाँ चेंजेस किया तुमने? ऊपर जाओ तो पुश को देखो, तो पुश 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 में देखो तो क्या डाल रहे हो तुम? पुश में जाओ तो क्या दिखा रहे हो तुम? पुश में दिखा तो पुश फंक्शन में जाओ, पुश फंक्शन में, या स्ट्रक्चर में जाओ. स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर में तो यू हैव स्टिल कीपिंग द सेम कैरेक्टर है. कैसे क्या होगा? नहीं हुआ. इतना छोटा भी नहीं कर पाते और प्रैक्टिस नहीं करता ना तुम लोग, इसके लिए हालत है. ठीक है, क्लोज करो, नहीं चाहिए, चलो. हु इज देयर? प्रवेश, प्रवेश दिखाओ, प्रवेश शेयर करो. रश्मि किया? रश्मि, यस सर. लेट मी चेक. कहाँ है? कुछ प्रोग्राम ही नहीं है. कहाँ हुआ? अच्छा, रुको रुको एक मिनट, रुको. हाँ ठीक है, जाओ नीचे, जाओ नीचे जाओ. ठीक है, मतलब बताते बताते सबका हो गया है. ठीक है, चलो ठीक है, क्लोज इट. हाँ रश्मि दिखाओ. चांदनी रेडी रहो, मैं एक बार देखता हूँ. रश्मि दिखाओ. सबका एक ही वेरिएबल क्यों होता है? सबका वही ए नहीं है. इज इट ए कोइंसिडेंस और आई डोंट नो. इस सबका वेरिएबल नेम भी सेम ही रहता है. व्हाई आई डोंट नो. सर जनरली हम लोग एन ही यूज करते थे ना पहले. जनरली पता के क्या रहता है सबका ऐसा कोइंसिडेंटली, तो ए बी सी डी भी तो ले सकता है. आई डोंट नो इधर इट्स ए कोइंसिडेंट और नॉट, कि सबका एक ही वेरिएबल क्यों हो जाता है. ठीक है, नीचे आओ. ये तुम्हारा ऊपर बात है, तुम खुद करोगे तो अच्छा है, कॉपी करोगे तो तुम्हारा तुम्हारा ही अच्छा है. सब कुछ तुम्हारा ही अच्छा है, मेरा कुछ आता जाता नहीं है. ठीक है, नीचे जाओ. ठीक है, ठीक है. स्टील दिस कैरेक्टर, क्या नाम है? नाल कैरेक्टर. ठीक है, क्लोज. हाँ चांदनी, चांदनी दिखाओ. Yes, sir. दिखाओ. दिखाओ.
जल्दी जल्दी एंट्री कर दे। हाँ, नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, जल्दी नीचे जाओ। रन करो, पुश करो। ऑफ करो, फिर से पॉप करो। इसलिए ये 2020 क्यों आ रहा है, सेम वैल्यू 2 बार क्यों आ रहा है, इसको ठीक करना है। पॉप वैल्यू 2 बार 2020 आ रहा है, फिर से करो। क्या करना, फ्लो हो गया। ठीक है, क्लोज करो। राम दिखाओ। एनीवन वांट्स टू शो? नहीं तो I'll ask Ram to show that dynamic so that you can discuss. What I said, you take one more variable, that is the size inside the stack itself. क्योंकि मुझे अगर 5 स्टैक बनाना है of different size and everything, that value should be inside that. तो उसके अंदर ही एक size करके एक वैल्यू ले लो ना, which indicates कि what should be the size of the T, क्योंकि size तो हमेशा चाहिए होता है for max and all. तो उसके अंदर वो size ले लो। जाओ ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। हाँ, उसके अंदर डालो एक int size। हाँ, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, एक फंक्शन तुम लिखो, फिर नीचे पुश के ऊपर एक फंक्शन लिखो। void create stack। नहीं, एक साथ फंक्शन में ऐसा थोड़ा ही होता है, फंक्शन में थोड़ा ही ऐसा होता है। हाँ हाँ, create stack करके उसके अंदर क्या पास करूं मैं, वो पॉइंटर पास करो, वो पॉइंटर पास करो, पॉइंटर पास करो स्टैक का, स्टैक का पॉइंटर पास करो, और हाँ, और साइज पास करो, साइज पास करो, साइज। हाँ, साइज पास करो, ठीक है। नाउ यू डू दिस थिंग्स। उसको पहले क्रिएट करो, मतलब हाँ, फिर इसको, ये प्रोग्राम बाकी सबको शेयर कर देना, उन लोग देखेगा, अगर कोई डाउट होगा तो यू आस्क राम रिगार्डिंग दैट। फिर नेक्स्ट डायनामिकली क्रिएट करो एरे को। टॉप को भी यहां से ही माइनस कर दो, टॉप को भी माइनस, यहाँ -1 यहाँ पे ही करो।
नहीं ऐसा नहीं है, इक्वल्स टू -1, टॉप इक्वल्स टू, इसको इनिशियलाइज करना है -1। हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे साइज चेक करने का जो है वो साइज से चेक करो। हाँ जहाँ है स्टैक का साइज का बात है, वो एक ही जगह में है शायद साइज का बात। हाँ ठीक है, अभी फंक्शन में मेन में ये डालो, इसमें एक ऑप्शन डालो क्रिएट स्टैक, क्रिएट करके दे दो एक पुश पॉप को, ये कर दो पूरा ही साइज का बात सब कुछ उसके अंदर डाल दो। तुम वहां से साइज ले लो और क्रिएट पास करके वो क्रिएट ये कर दो। लेकिन चीज जो है अभी नहीं, जस्ट एक 1 डाल दो, पुश को 2 कर दो, ये को 3 कर दो। अभी ये जो है क्रिएट स्टैक करो, ठीक है वो भी कर सकते हो 0। क्रिएट फंक्शन को कॉल करना है ना, क्रिएट फंक्शन को कॉल करो। इसमें क्या भेजोगे, स्टार स्ट्रिंग एम्परसेंड होगा, या सिर्फ एक पॉइंटर क्लियर करो, एक पॉइंटर क्रिएट करो, पहले ऊपर पॉइंटर क्रिएट करो, उसको जस्ट सिंपली भाई कॉल बाय वैल्यू कर दो। इसके एम्परसेंड नहीं चाहिए क्योंकि तुमने तो स्टैक अभी तक क्रिएट ही नहीं किया। क्रिएट तुमने स्टैक कैसे डिक्लेयर किया, देखो ऊपर दिखाओ, ऊपर दिखाओ स्टैटिक किया है ना। नहीं इसमें नहीं नीचे मेन में जाओ, स्टैटिक किया है, ठीक है तो एम्परसेंड स्टिकर होगा, एम्परसेंड स्टिकर, हाँ एम्परसेंड स्टिकर। हाँ ब्रेक करो, ब्रेक, एक मैसेज दे सकते हो कि स्टैक क्रिएटेड, ऐसा करके दिखने में अच्छा होता है। तो न्यू लाइन डाल दो, ऊपर नीचे सामने पीछे न्यू लाइन डाल दो, सामने भी डाल दो एक तो। ठीक है, अभी और तो कुछ नहीं है, नहीं और कुछ चेंजेस करना नहीं है, आई थिंक दिस इज ओके, हो जाएगा। एलिमेंट भी ये एन डाल रहे हो, पुश में एन देखो हटाओ, उसका नहीं तो एरर दिखाएगा, एन हटाओ। हाँ ठीक है चलो अभी ये करो, रन करके देखो। ठीक है क्रिएट करो, इसको भी थोड़ा और ठीक करना है, ये क्या नाम है, what you have to do, like until unless you are creating, it should be null ना, it should remain null। तो वहाँ पे if someone goes to push and pop without going for the creation, तो लिंक लिस्ट जैसा यहाँ पे भी एक मैसेज आना चाहिए कि it's not yet created, please create the stack first। तो इसको पहले चेक करना है कि स्टैक एक्चुअली क्रिएट है ही नहीं, ठीक है समझ में आया? हाँ वो तुमको देखना है। हाँ और स्टैक को भी जो बना रहे हो, स्टैक ऑल्सो शुड बी, मतलब क्या बताओ, एक स्टैक वो भी डायनामिकली होने से भी अच्छा है। ठीक है छोड़ दो अभी, तुम बाद में चेंज कर लेना, उसको भी ये कर लेना। सो नाउ
अभी बाकी लोग, so you have to understand, you have to practice the same program of your own without looking into that code. तुमको ये करना है, अगर कर पा रहे हो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो then you have to put more and more and more and more effort. तो छोड़ने से नहीं होगा, तो cannot quit and live like that. Easy life easy नहीं होता है, अच्छा चीज पाने के लिए कुछ एफर्ट भी देना पड़ता है, ऐसे मैजिक नहीं होता है कुछ. तो अभी what you will have to do, what you have to do, सोचने दो थोड़ा. तो इसमें तुम लोग क्या करोगे, एक छोटा सा एप्लीकेशन यू कैन डू दैट. यू विल टेक टू स्टैक, एक स्टैक में पूरा वैल्यू डालोगे, ओके, पूरा डालोगे, और वो वैल्यू लेके तुम एक के बाद एक पूरा ऑफ करोगे उसको. एक एंटायर प्रोग्राम विल रिमेन सेम, खाली उसमें वो खाली एडिशनल एप्लीकेशन तुम लोग को बनाना है. एक स्टैक से पूरा वैल्यू लेके पॉप करते 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 दूसरी जगह में डालना है, दूसरा एक स्टैक में डालना है, और वो स्टैक को तुम फिर से पॉप करोगे. मतलब पहले तुम क्या वैल्यू दे रहे हो उसका एक डिस्प्ले होगा, ठीक है, कि 1 2 3 4 5. अगर 1 3 4 5 को तुम अगर एक एक करके पॉप करोगे तो एक्चुअली बेसिकली कैसे आएगा, 5 4 3 2 1 ऐसा करके प्रिंटिंग होगा. मुझे ये नहीं चाहिए 1 2 3 4 5, ये इस तरह का पॉपिंग होना चाहिए. कैसे होगा, एक स्टैक में 1 2 3 4 5 डालो, इसके बाद 5 उठाओ एक जगह में पुश करो, 4 उठाओ दूसरे स्टैक में पुश करो, 3 उठाओ दूसरा स्टैक में पुश करो, 2 उठाओ दूसरा स्टैक में पुश करो, 1 उठाओ दूसरा स्टैक में पुश करो. जब एम्प्टी हो गया डन. अभी वो स्टैक में क्या होगा, तुम एक एक करके पॉप करके करके उसको ये करो, प्रिंट करो. तो कैसे प्रिंट आएगा, 1 2 3 4 5. समझ में आया? यस और नो? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? यस सर. Yes, sir. बाकी लोगों को यस सर. दो स्टैक लेना है. पहले एक स्टैक में 1 पुश किया, 2 पुश किया, 3 पुश किया, 4 पुश किया, 5 पुश किया, ठीक है, हो गया 5 पुश. अगर तुम वहां से पॉप एक एक करके पॉप करके डिस्प्ले करोगे तो कैसे प्रिंटिंग होगा, 5 4 3 2 1, है कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? यस सर. Yes, sir. मुझे ये नहीं चाहिए. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक टू स्टैक, स्टैक 1 एंड स्टैक 2. अभी स्टैक 1 में 1 2 3 4 5 डाला, इसके बाद एक एक करके स्टैक 1 से उठाओ और स्टैक 2 में पॉप पुश करो. तो कौन सा वाला पहला पुश होगा, कौन सा वाला पहले पुश होगा? हेलो, देखो अब आंसर नहीं होता है. कौन सा वाला पहला पुश होगा इन स्टैक 2? सर 5. 5. सेकंड, नेक्स्ट वन 4. 4. सो 5 4 3 2 1. अभी अगर सेकंड स्टैक से तुम पॉप करोगे डिस्प्ले करने से कैसे आएगा, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. मुझे ये चाहिए. The order you have entered, the same order I want the display, but using 2 different stack. समझ में आया? Is it clear? यस सर. मैं हर क्लास में कुछ ना कुछ होमवर्क देता हूँ. कोई इसको सीरियसली लेते हो, कोई इसको सीरियसली नहीं लेते हो. जो सीरियसली ले रहा है दे आर द गेनर, और जो सीरियसली नहीं ले रहा है दे आर द लूजर. खाली आके क्लास में बैठने से यू आर द लूजर, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल पेपर है नहीं कि कहीं पे भी एग्जाम से पहले मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, पढ़ लूंगा, हो जाएगा.
It is not like that. You have to do a rigorous practice. Practice makes a man perfect. अगर नहीं करोगे, मैं बार-बार warning दे रहा हूँ, तो बैठ के रहना, ना रहना, class attend करना, ना करना, it's exactly the same. Day by day, it will going to be tougher. It will going to be tougher. So ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा ऐसे ही हो जाएगा. Theoretical कर सकते हो. कोई दोस्त से तुम का जैसे हेल्प लेके तुम लोग सी पास किए हो, जो भी हो, तो ऐसे ही करोगे, नो प्रॉब्लम. अल्टीमेटली प्रोग्रामिंग एटलीस्ट तुम्हारा कोई गेन नहीं होगा, ये तो गारंटेड है. ठीक है. और सेकेंड थिंग दैट आई वुड लाइक टू डू इट, द राइट द प्रोग्राम फॉर इंप्लीमेंटिंग स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट. ओके, यूजिंग लिंक लिस्ट. राम तुम ऑफ करो. So implementing linked lists, at least it should be now easier for you. The push operation is nothing but a insert at the beginning. A pop operation is nothing but a delete at the end. ये एक single linked list में तुम लोगों को implement करना है by now using function. You have to write two function, push and pop. But using linked list, जहाँ पे actually nothing but the insert at the beginning and delete at the end, ये दोनों करने से actually ये automatically ये stack implementation होगा. So I want to see both the things. I want to see both the things. ये करके दिखाना मुझे. Is it okay for you? Is it okay for you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, you will going to try. I mean genuinely. दूसरा फ्रेंड के पास बेगिंग नहीं करोगे कि मैं मुझे नहीं होता है, मुझे प्लीज दे दो, तो यू आर द लूजर. और नहीं कर पा रहा हूं, वो भी एक काइंड ऑफ ए लूजर है. जो फाइटर है, दे विल गोइंग टू गो ऑन फाइटिंग. मुझे करना ही है. अगर वो नहीं कर पाते तो क्या, और अगर फाइटिंग एटीट्यूड ग्रो कर पा रहे हो, वेरी गुड. आइडिया इज पुश एंड ऑपरेशन यू हैव टू डू. यस, एक ही साइड से सॉरी इसमें मैंने गलती कर दिया. राइट, ये insert at the end and insert at the right, insert at the end and insert at the delete at the beginning. Okay, right. So sorry. So right, you are absolutely right. Insert at the end and insert at the beginning. हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने सही बताया गलत बताया? रुको एक मिनट सोचने दो. Insert whatever it's inserting last. नहीं ठीक ही है. तो insert at the beginning. Insert at the beginning मतलब पहले हमेशा whenever some new notes are coming, you are adding in the beginning. Adding at the beginning. और टॉप नहीं ठीक है. एंड में जाएगा. एंड बेसिकली योर वन टॉप इज बेसिकली योर लास्ट पोजीशन. you can keep a pointer called top, जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट किया हुआ है उसको दिखाएगा. तो वहां से एंट्री डिलीट होगा, वहां से ही इंसर्ट होगा. राइट, इंसर्ट एट द एंड एंड डिलीट एट द एंड. ओके, ये दोनों करने से पुश एंड पॉप ऑपरेशन हो जाएगा. So you have to try this. You have to try these operations. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. इसको try करना. We'll try to do these things and show me at any time and check that program. ठीक है? So next class we will see Q. अच्छा, Q देखेंगे. we'll see the Q, same way we'll do that thing. Okay, और इसके बाद we'll see this application of stack, that is expression evaluation. अच्छा, what I have done in the Google Classroom, I have shared few slides of the tree from the early stage itself. I have shared already. It was there, so I have shared with you. So free time you start reading that thing. और मेरा video lectures are also available.
सो धीरे धीरे उसको भी तुम लोग देखना स्टार्ट करो. ओके, स्टार्ट करो. बाय द टाइम विल फिनिश इट अप, आई थिंक यू शुड एबल टू डू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. तो वो तुम्हारे लिए मैं देके रखा हुआ. एंड व्हाटएवर स्लाइड्स दैट आई एम राइट नाउ आई एम डूइंग, आई विल शेयर इट लेटर ऑन. एट द एंड आई विल शेयर इट बिकॉज़ आई एम गोइंग ऑन अपडेटिंग दैट स्लाइड. सो बाद में मैं इसको शेयर करता हूँ. So you will go do these things. So next class will meet once again with the class Q. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Okay. See you then. And अंबर भी करो. हाँ, अंबर ट्राई करो. अंबर है कि नहीं? अंबर भी छोड़ के चलो. अंबर तो है. अंबर, हाँ, तो इसको तुम नहीं करोगे तो कैसे होगा? वो एमसीए करके निकल जाओगे और प्रोग्राम अभी तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तो कैसे क्या होगा? अरे पास करना है क्या? वो पास का कोई वैल्यू नहीं है बाबा. दुकान खुल के बैठना पड़ेगा. इतना लड़का लोग वो डिग्री लेके हाथ में ऐसे बैठा है. क्या करोगे? ठीक है, ठीक है, चलो स्टे सेफ. एकदम बाहर मत जाना, हालत बहुत बाहर में खराब है. अभी जो सुना, एक सिलेंडर 75,000 में बेच रहा है आदमी लोग, लूट रहा है. आदमी एक साइड में मर रहा है, दूसरा लूट रहा है. 75,000 एक सिलेंडर. सोचो, बी केयरफुल. बाहर हो सके जाना नहीं, मतलब जरूरत, एकदम जरूरत ना हो तो मत जाना. घर में रहना सब, क्योंकि अपने आप को बचाना है और फैमिली को भी बचाना है. वेरी वेरी पैथेटिक कंडीशन आउटसाइड, वेरी पैथेटिक कंडीशन हर जगह में, कोई भी स्टेट हो. सिक्किम में तो डबल म्यूटेंट भी डिटेक्ट हो गया है. दिस मोर माने सुपर स्प्रेडर, ये भी यूके का स्ट्रेन भी मिला है. लाइक कहाँ लेके जा रहा है आई डोंट नो. हॉस्पिटल में ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना क्या है, कोई काउंट नहीं है. आदमी मर रहा है, आदमी का बॉडी भी नहीं मिल रहा है. एक घर में पकड़ रहा है, सबको पकड़ रहा है, मर रहा है तो मर रहा है. ऑक्सीजन अगर 75,000 देके खरीदना पड़ेगा, वो आदमी कहाँ जाएगा? ऐसा हालत है, ना वैक्सीन है ना कुछ है. सो ओनली थिंग इज दैट जस्ट कीप योरसेल्फ सेफ. जितना हो सके घर का बाहर जाओ ही मत, जाओ ही मत. जितना हो सके ये करो, स्प्रे करो, हाथ मतलब हाथ को सैनिटाइज करता रहो. मास्क तो डबल मास्क लगाओ. चाहिए तो शील्ड खरीद लो, सर पे एक कवर खरीद लो और सैनिटाइज करता रहो. देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव. ठीक है, समझ में आया तुम लोग को? नहीं नहीं, या तुम लोग बाहर घूम रहे हो? नहीं जा रहे सर. नहीं, लड़की लोगों का तो ठीक है. लड़का लोगों का कौन कौन एडवेंचर लड़का हूँ सर. है? घर पे हूँ सर. हाँ, बाहर बाहर. कौन सा कौन सा? सर नहीं, ये ऐसे बोल रहे. ओके फाइन, सी यू.